Hello students, welcome to your own YouTube channel Study Kshetra. In this video, हम बात करने वाले हैं one of the most important part of algebra which is called sequence, series and progressions. Hi, my name is Vaibhav. After clearing the CAT exam with 99 percentile 7 times, I am here to help you all कि कैसे हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं. फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. In this video, we are going to cover the objectives. First of all, what is sequence? This will make you understand the active sequence होता क्या है. Then we'll talk about what is series. Then what is progression. Types of progression के बाद हम यहाँ बात करेंगे about the arithmetic progression in this video and how we can make the general terms of an AP. Then the question in the exam which comes from some of the terms of AP. And in the end, we'll talk about the important results of arithmetic progression which will help you to learn so many different questions in a very easy way. Now, starting with the very basic, what is this sequence? होता क्या है ये sequence? A sequence is a set of numbers occurring in a definite order or by a rule. यहाँ पे if I take an example 2, 5, 8, 11, some order is followed, then we can find up to n terms. Or we can take an example like this 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 up to n terms, means some definite order or rule will be followed to make a sequence here. The next thing we have, what is this series? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही है. A series is a sequence of numbers in a certain pattern. For example, if I take a multiple series of 5, we'll get 5, 10, 15, 20 up to n terms. Or we can take a prime number series. So our prime number starts with 2, then 3, then 5, 7, 11 up to n terms. Or here we can take a squarical series 1, then 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16. So in a same way we can find up to n terms for these different series. This is called series where a sequence of numbers in a certain pattern is known. Now what is this progression? ऐसा क्या है जो इतना important है? It is simply the sequence of spatial type या फिर series of spatial type which is called progression. A certain rule will be followed, but a defined rule जो हम पढ़ने वाले हैं that is simply called progression. Now we have various types of progressions. The first one we have arithmetic progression. Second one we have geometric progression or we can say GP. Third one we have harmonic progression or we say HP. Now in the exam we'll see the questions from AP and GP. Getting the question from harmonic progression is like chance 1 in a lakh chance. So means a very rare chance कि you will ever see a question from harmonic progression in any entrance test exam. हाँ, IIT exam में जरूर आ सकता है. Let's start with the main objective of this video which we are going to cover is arithmetic progression. इस वीडियो के एंड में आते आते आप ये सीख जाएंगे कि arithmetic progression कैसा भी क्वेश्चन आए how we can easily do in 10 to 15 seconds. So again I am saying अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Now what is this arithmetic progression? It is simply a sequence with a common difference between the consecutive terms is known as arithmetic progression. Means हमारे पास कैसी भी सीरीज होगी, अगर हम उनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे that will remain same for the whole series. For example, 1, 3, 5, 7, 9. Now, if we check here the difference between these terms, हम check करेंगे 3 minus 1, we are getting a difference of 2. 5 minus 3, difference of 2. 7 minus 5, difference of 2. So means in this whole example, the difference of 2 will be there. In the next example, if I do 38 minus 42. So we are getting a difference of minus 4.
34 minus 38 minus 4 means every time we are reducing the number by 4. So after 26 our next number will be 22 and so on. In the next is we have minus 17, minus 4, minus 11. So what we can see number हमारा increase हो रहा है ना कि decrease. If we do minus 14 minus 17, so our series is increasing by 3. Minus 17 plus 3, we are getting minus 14. Minus 14 plus 3, getting minus 11. Minus 11 plus 3, minus 8. So in the same way, next number I can write minus 5. Again add kiya, minus 2. So in this way, up to n terms, we can find the series here. Now we have the first basic part of arithmetic progression, how to find a general term of an AP. हम क्यों फॉर्मूला क्रैम करें, क्यों ना हम उस बेसिक को समझ लेते हैं जहां से फॉर्मूला बन के आता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2, 7, 12, 17, 22 एंड अप टू सो ऑन. सो लेट्स से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसे हम डिनोट कर रहे हैं a के साथ एंड लेट द कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं d के साथ, which is the standard notation of this AP. Now our first term is 2. So I can write here my first term a or a1 is equal to 2. I am having the second term here 7. Now if I see the difference between these two terms, हमारा difference कैसे निकलता है? a2 minus a1. So we are getting the difference of 5. I can write down this second term as 2 plus 5, which is 7. In the third term, we are getting here 2 plus 5, 7. 5 add kiya, getting the term 12, which is a3. Or I can write here 2 plus 5 plus 5. Similarly, our fourth term, we are getting 12 plus 5, 17. Or I can write here first term में 5 add किया, second आया, 5 ऐड किया, थर्ड टर्म आया, 5 ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गई. सो इफ यू सी वी आर गेटिंग दिस a1 is equal to 2 as a. Our second term we are getting here a plus d. Our third term 2 is a. हम 5 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, so I can write here a plus 2d. Similarly, our fourth term will be a plus 3d. So in the same way, can I write this nth term will be equal to a plus, जब 2 था तो हमने 1 टाइम d ऐड किया, 3 है तो 2 टाइम ऐड किया, so I can write here n minus 1 d. So here is the formula for finding the nth term, that an is equal to a plus n minus 1 d. अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, हमारे को डिफरेंस पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि हमारे को 10th टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी टर्म. नाउ लेट्स क्रॉस चेक. दिस वाज आवर 5th टर्म एंड आई नीड टू फाइंड द 5th टर्म. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? a5 is equal to a plus 5 minus 1 into d. अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2. So we can write here a is equal to 2. 5 minus 1, 4. Difference was 5. So 2 plus 20, we are getting the 22, which is the 5th term for this particular pattern or particular series. So in this way, using this formula that an is equal to a plus n minus 1d, we can find the value for any term if the series is in the arithmetic progression. So now let's understand this concept more beautifully with a variety of questions. The first question we have, find the 23rd term of the progression 3, 7, 11, 15 and so on. So if we check, हमारे पास इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 3. हमें निकालना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास. When I am doing 7 minus 3, 4. 11 minus 7, 4. This is 4. Means difference is defined, difference is constant, so difference is 4 for this particular series. Now we are supposed to find the 23rd term. तो अभी हमने क्या सीखा? an is equal to a plus n minus 1 d.
अब यहाँ पे for this 23rd term what we are getting value for the a is 3 plus n कितना है हमारे पास 23 minus 1 difference is 4 so I can write here 3 plus 22 into 4 so we are getting 3 plus 88 is equal to 91. So for this particular question, our 23rd term for the given progression will be 91. So for this question, our answer is 91. We can try one more question where we need to find the 31st term of the progression 20, 13, 6 and so on. So again we can see our first term is 20. टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस 20 में से हम 7 को रिड्यूस कर रहे हैं सो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है -7 हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं क्या तो a2 माइनस a1 कर लेंगे या a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 सो व्हेन आई एम डूइंग a2 माइनस a1 13 माइनस 20 वी आर गेटिंग -7 और वी आर डूइंग 6 माइनस 13 वी आर गेटिंग -7 सो फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज पर्टिकुलर प्रोग्रेशन our difference is -7. Now the question is demanding for the 31st term. So हमारे पास क्या आ जाएगा a which is 20 plus n minus 1 31 minus 1 into -7. So we are getting here 20 plus 30 into -7 which is 210. So minus 210 20 minus 210 we are getting the answer minus 190. So for this particular question our answer will be minus 190. We have a next question कि which term of the AP 5, 8, 11 is 53. So means in this हमें nth term की वैल्यू तो गिवन है बट ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है. So we were having this formula कि an is equal to a plus n minus 1 d. अब यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू गिवन है हमारे पास 53. Our first term is 5 and we are supposed to find the difference. So if you check 8 minus 5 difference is 3, 11 minus 8 difference is 3. तो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू 3 आ गई. Now simply we have to solve. So 53 minus 5 will have 48 is equal to n minus 1 into 3. 48 dividing by 3 we are getting 16 is equal to n minus 1 or we can say n is equal to 17. यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा. So for this particular question the logic was same कि हमने उसी फॉर्मूला को यूज किया. डिफरेंस क्या था हमारे पास nth टर्म की वैल्यू गिवन थी सो वी वर सपोज टू फाइंड ये टर्म कौन सी है. यूजिंग दिस थिंग हमने a को पुट किया an की वैल्यू पुट की d को पुट किया सो वी आर गेटिंग 17th टर्म फॉर द गिवन AP will be 53. Now the next important thing in the AP we have to find sum of the given terms. Now the sum of the terms of AP can be find using the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d. So using this formula अगर मेरे पास number of terms हैं मुझे first term पता है मुझे difference पता है so we can directly find the sum of all the terms. Even we can modify this formula in one more way. यहाँ पे इस 2a को I can write a plus a and as we know an or the last term is equal to a plus n minus 1 into d. So now I can also write this Sn is equal to n by 2 a. ये क्या बन जाएगा हमारे पास a plus n minus 1 d the last term. So Sn is also equal to n by 2 into first term plus last term. अगर हमारे पास first term है last term है और हमें number of terms भी पता है so directly इसको भी use करके we can find sum of the given terms. Now for example find the sum of the first 18 terms. मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 18
of an AP whose first term is 5. तो A हमारे पास 5 given है and the common difference is 3. So as we have studied, the formula is n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. So हमारे पास n क्या आ रहा था 18 by 2 2A, हमारे पास A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 plus n minus 1 that is 18 minus 1 into D which is 3. 18 by 2 हमारे पास 9 आ गया, 2 into 5 we are getting 10, 18 minus 1 17 into 3 we are getting 51. So we have 9 into 61. So for this particular question 9 into 61 our answer will be 549. So in this question the sum of the first 18 terms जिसकी first term 5 है और common difference 3 है, using this formula our answer will be 549. Now we have a next question to find the sum of the series 13, 17, 21 up to 97. So now in this question हमारे पास series तो given है, इस series की help से I can find the first term which is 13. I can write the difference कि 17 minus 13 difference आ रहा है 4. Number of terms मुझे नहीं पता, last term an या l कह सकते हैं, हमारे पास given है 97. So that means यहाँ पे first of all we need to find the number of terms. I can use this formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Now this last term is given 97. a क्या आ रहा है हमारे पास 13, d आ रहा है 4. So we are having 13 plus n minus 1 into 4. So now 97 minus 13 we have 84 is equal to n minus 1 into 4. 84 को 4 से डिवाइड करेंगे we are getting 21 is equal to n minus 1 or this n is equal to 22. So that means for this particular question number of terms we are having 22. Now our question was to find the sum of the series. Now we have studied that sum of the series we can find either by using n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or we can find this sum as n by 2 into the first term plus the last term. हमारे पास दोनों ही term known है, first term भी और last term भी. So I can find the sum using this one formula. n क्या आ रहा है हमारे पास 22. So we are getting 22 by 2 into the first term was 13 and the last term is 97. कट किया 11 आ गया. So we are having 11 into 13 plus 97 is 110. So we are getting the sum for the given series as 11 into 11 121 0. So for this particular question our answer will be 1210. So in this kind of question first of all we need to find the number of terms. After getting the number of terms either we can find the sum using the first logic or using the second logic, our answer will be same. So for this question our answer is 1210. Now we have a next question कि find the three terms in AP whose sum is 36 and the product is 960. अब हमें terms ही निकालनी है यहाँ पे. Now in this question हम terms को क्या let करें? A1, A2, A3 आंसर नहीं आएगा. So whenever the odd number of terms 3 terms है 5 terms है 7 terms है, हम क्या करेंगे मिडल टर्म को तो मान लेंगे a, फिर एक टर्म को हमने माना a माइनस डी, एक टर्म को हम मानेंगे a प्लस डी. 5 टर्म्स होती तो a माइनस 2d और a प्लस 2d को भी हम ऐड कर देते. इवन टर्म्स के लिए वी हैव अ डिफरेंट थिंग. सो कभी भी ऑड टर्म्स गिवन है मिडिल वन को a मान के साइड में a माइनस डी a प्लस डी, a minus 2d a plus 2d. In this way we can increase the number of terms. The question says sum is 36. So now when I will add these three terms a minus d plus a plus d, this thing is equal to 36. Now what is the benefit of letting in this way? This d
and D will be cancelled. So we are getting here 3A is equal to 36 or this A is equal to 12. So we have got the middlemost number that is 12. अब यहाँ पे डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है. अगर डिफरेंस 1 होगा तो ये बन जाएगा 11, 12, 13. डिफरेंस 2 होगा तो 10, 12, 14. मतलब डिफरेंस अभी तक मुझे नहीं पता. Further it is given the product is 960. So now if I multiply these three terms, I would be getting A minus D into A plus D is equal to 960. अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया. This A is equal to 12. I can equate here. So we are getting 12 minus D into 12 plus D is equal to 960. अब ये 12 तो अकेला है तो इस 12 को हम उस साइड लेके जा सकते हैं. So we are getting 12 minus D into 12 plus D is equal to 960 by 12, or we can write here 80. Now in the starting videos of algebra, in the first video we have done A minus B, A plus B. क्या होता है? A square minus B square. So I can write here 12 square minus D square is equal to 80, or this 12 square is 144 minus D square is equal to 80. So what we are getting here? 144 minus 80, this D square is equal to 64. So यहाँ पे स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास D की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 8. अब सर ये दो वैल्यू क्यों है? प्लस 8 माइनस 8 वाई. क्वेश्चन था कि फाइंड द टर्म्स इन एपी. अगर मैं D को प्लस 8 लेके चल रहा हूं तो हमारे पास यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 12 minus 8 4 A 12 A plus D 12 plus 8 20. So we are getting the terms 4, 12, 20 in the increasing order. But if I take minus 1 now, sorry, minus 8, so what we are getting? 12 minus 8, which is 20. This will remain 12. A plus D 12 minus 8 4. The terms will be same. पहले आ रही थी 4, 12 and 20 या फिर 20, 12 and 4 in the decreasing order. Question was find the three terms. The terms will remain same. So ये मैटर ही नहीं करता कि मैं प्लस 8 लूं या माइनस 8 लूं. My terms will remain same for all the questions. So for this particular question, my answer will be three terms are 4, 12 and 20. So in this way we can find the terms for any given question. Now we have one of the good questions for the entrance exam. Like the first term of an AP is 7 and the last term is 47. Find the number of terms and the common difference if the sum is 297. So in this question हमारे पास first term given है which is 7. हमारे पास last term given है an given है 47. हमें number of terms निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है एंड सम गिवन है ऑफ दोस टर्म्स इज 297. अब मैं क्या लॉजिक यूज करूं? हमने दो लॉजिक कर रहे हैं कि अगर मेरे पास टर्म्स हैं, हमें टर्म्स निकालनी है, वी कैन डू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब ना तो मुझे n पता ना मुझे d पता, मतलब यहां से आंसर तो नहीं आएगा. हमने सम ऑफ टर्म्स करा, sn इज इक्वल टू दो फॉर्मूले करे. यूजिंग दैट सेकंड लॉजिक कि सम ऑफ द टर्म्स is equal to n by 2 into first term and last term. अब ये दोनों ही टर्म्स मुझे पता है तो मैं इसको यूज करके we can find the number of terms. Now sum is given 297 is equal to n by 2 a which is 7, the last term which is 47. So we are getting here 297 into 2 is equal to n into 47 plus 7, we are getting here 54, or I can write here this n is equal to 297 into 2 upon 54. Now we can solve this logic. हमने 2 से कैंसिल किया, we are getting here 27
27 से कैंसिल किया, वी आर गेटिंग 11. So I can write here n is equal to 11. So we are getting the number of terms as 11. Never waste your time in multiplying these numbers. I say in all my video, सारी वैल्यूज को पहले क्लब कर लें एंड देन सॉल्व करें. हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. So for this particular question, our number of terms are 11. Now the second part is we are supposed to find the common difference. Now we can use this logic कि an is equal to a plus n minus 1 d. So we are having the last term as 47. First term is 7. यहां से हमारे पास n कितना आ रहा था 11. So I can put 11 minus 1 into d जो हमें सॉल्व करना है. 47 minus 7 40 is equal to 10d or our d is equal to 4. So for this particular question, our number of terms are 11 and the common difference for this AP will be 4. So in this way, we just have to read कि question में हमें क्या given है and what we are supposed to find and then start solving the question. Now, the next question we are having, it's a very specified question basically. कि the sum of 5 terms of an AP is 75, then find the third term of the AP. अभी हमने क्या किया, जब भी odd terms होती हैं तो middle term को हम A मान लेते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा A minus D, यहाँ पे आ जाएगा A plus D. Then I can put A minus 2D, A plus 2D. So हमारे पास first term आ गई A minus 2D, second term A minus D, third term A, then A plus D, A plus 2D. Other in the question it is given sum of these terms is 75. So now when I will add all these terms, A minus 2D plus A minus D plus A plus A plus D plus A plus 2D, this thing is given 75. So 2D and 2D cancel, minus D and D cancel. We are getting here 5A is equal to 75 or this A is equal to 75 by 5 which is equal to 50. अब हमारे पास A की वैल्यू तो आ गई. ये A कौन सी वैल्यू थी हमारे पास? The middle term, the third term we are getting here 15. अगर मेरे को डिफरेंस पता है then I can find all the 5 terms. अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है. Now why it is a specified question? यहाँ पे वो पूछ रहा है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द एपी और हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ रही है 15. इफ दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, हम नहीं निकाल सकते. फाइंड द सेकंड टर्म हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दिस क्वेश्चन डिफरेंस इज नॉट नोन. Then our answer would have been cannot be determined. So algebra is a very specified topic. So for this question, our question was third term of the AP. Our answer will be 15. Now we are having a next question. The 6th and 63rd term of an AP are 37 and minus 77. Then find the 21st term. Now again, as I say, these are very specified question. So यहाँ पे क्या given 6th term, which is A6, or I can write A plus 5D. क्या value given है हमारे पास 37. Then they are saying the 63rd term. So we are having A63 which can be written as A plus 62D is equal to minus 77. Now if we subtract both these terms तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, of course आ जाएगी. So we are doing here A6 minus A63. So this will be cancelled. This will turn plus. So what we are getting here? A से A cancels out. 5 minus 62, we are getting here minus 57D is equal to 37 plus 77 which is equal to 114, or we can write as D is equal to minus 2. So subtracting both these terms हमारे पास D की वैल्यू आ गई which is minus 2. Now putting this value in any of the part. First one was easy, A6 term. So I can put here A plus 5D. D कितना है? Minus 2. 5 into minus 2 is equal to 37. Or I can write here A
minus 10 is equal to 37. So we are getting A is equal to 47. Now in this question, अभी तक हमारे पास D आ चुका है, हमारे पास A आ चुका है. So that means now I can find any given term. क्वेश्चन में कह रहा है 21st टर्म निकालो. That's okay. हमें क्या निकालना है? A21. That will be A plus 20D. अब A की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास? 47. 20 into D. D की वैल्यू थी हमारे पास -2. So we are getting here 47. 20 into -2 -40. So 47 minus 40. Our 21st term will be 7. So for this particular question, our answer will be 7. So means जो भी question है उससे पहले लिखें and then start solving. You will get answer to all the given questions. Now we are having some important results in the arithmetic progression which will help you a lot in various exams. The first one result we have to find sum of first n natural numbers means 1 plus 2 plus 3 up to n terms हम कैसे निकाल सकते हैं? We can directly find using the formula n into n plus 1 by 2. So using this formula we can directly find sum of the first n natural numbers. Then suppose we have to find sum of squares of first n natural numbers कि 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square हमें सब निकालना हो. So we can use the formula n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6. So using this formula within a fraction of seconds we'll get the answer for sum of squares of first n natural numbers. Then the third result, we need to find sum of cubes of first n natural numbers कि 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube हमारा क्या आंसर आएगा? हमें दो ही याद करने हैं. सिंपल सा लॉजिक क्या है? जो आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का था उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखें n into n plus 1 by 2. सही तो सेम हो गया. अलग क्या है? इसका स्क्वायर कर देंगे. इस पूरे को स्क्वायर करके विल गेट द सेम आंसर. हमें निकालना है टू टर्म्स का फर्स्ट का सम. 1 plus 2 कितना होता है? 3. सो टर्म्स है 2. 2 into 3 by 2 विल गेट द आंसर 3. मुझे क्यूब्स का सम निकालना है. 1 cube is 1. 2 cube is 8. So 1 plus 8 9 आना चाहिए. So 3 का स्क्वायर directly we are getting the answer 9. So just we need to learn these two formulas. क्यूब्स के लिए n वाले का स्क्वायर कर देंगे and you will get the answer. So let's understand this result with some examples. We have a question कि find the sum of first 20 natural numbers. मतलब 1 plus 2 plus 3 up to 20 निकालना है. So यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला सीखा कि if we need to find the sum of first n natural numbers, I can use n into n plus 1 by 2. अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास? 20. So I can write 20 into 20 plus 1 21 by 2. Simply cut किया. So we are getting the answer 10 into 21 as 210. So for this particular question, sum of first 20 natural numbers, our answer will be 210. Now with this natural numbers, let's derive this thing. अगर हमारे पास सारे के सारे odd numbers हैं, तो क्या हम उसको कैसे solve करें? क्या हमारे पास कोई logic है which can help us to find the answer in a minimum time? Yes, we have a logic. We need to find sum of first n odd numbers. For example, हम first n odd numbers लेते हैं. Let's say 1 plus 3 plus 5. I have taken 3 odd numbers. Sum क्या आ रहा है? 1 plus 3 plus 5 9. So what logic we have? सीधा कर देंगे n का square. अब यहाँ पे n क्या है? Number of terms. So I have taken 3 terms. 1 plus 3 plus 5 3 terms. 3 का square क्या आ गया? 9. यहीं पे अगर हम 4 terms की बात करते हैं, our first 4 terms are 1 plus 3 plus 5 plus 7. 4 odd terms आ गई. This is 16. So 4 का square 16 will get the answer only in 1 to 2 seconds. Similarly, we need to find sum of first n even numbers. For example, if I take 2 plus 4 plus 6, we are getting here 12. तो इसको कैसे directly करें? We can do this thing by doing n into n plus 1, where n is the number of even terms, first even terms. So n was 3 terms लिए,
3 into 4 सेम आंसर 12। अगर यहीं पे हम 4 टर्म्स लेते हैं, फर्स्ट 4 इवन टर्म्स 2 plus 4 plus 6 plus 8, तो ये 20 आना चाहिए। लेट्स क्रॉस चेक, हमारे पास फर्स्ट 4 इवन टर्म्स हैं, so 4 into 5 we will get the same answer 20। so in this way अगर हमें निकालनी है first n odd terms, so using n square, number of terms का square, will get the answer। sum of first n even numbers, so हमें क्या करना है n into n plus 1, n is the number of even terms and we'll get the answer only in 1 to 2 seconds। now for example, find the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to 21। so हमारे पास सबके सब odd terms हैं, but ये odd terms हैं कितनी, नंबर से 21 तक, 21 तक odd terms कितने आ रहे हैं। अब यार क्या तो हमारे पास odd नंबर होएगा या even नंबर होएगा। अब 21 का हाफ 10.5, मतलब मेरे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, टोटल वी आर हैविंग 11 odd numbers here, or we can count 1 3 5 up to 21, we are getting 11 numbers here। now the logic was, इनका सम निकालने के लिए हमें क्या करना है n स्क्वायर, और नंबर्स कितने हैं 11, so 11 का स्क्वायर डायरेक्टली our answer will be 121 for this particular question। now in this way अगर हम number of terms पता चल जाए, सीधा स्क्वायर करके we'll get the answer। similarly we need to find sum of first 10 even numbers। अब first 10 even numbers कौन से होते हैं, 2 plus 4 plus 6 up to 20। कैसे किया फास्टली कि 20 by 2 10 आ गया, so even numbers के केस में ऐसे। now the formula was to find the sum of first n even numbers, n into n plus 1, directly given है 10 even numbers, so 10 into 10 plus 1 11, our answer will be 110 for this particular question, कि sum of first 10 even numbers will be 110। now we are having a question कि find the sum of squares of first 10 natural numbers, that means we need to find 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 square। अब सर इसे तो हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, यस वी कैन ऐड, बट अगर वही क्वेश्चन होता सम ऑफ फर्स्ट 100 के स्क्वायर्स का सम निकालना है तो अब थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो अभी भी हमने क्या फॉर्मूला सीखा था कि whenever we need to find sum of squares, it will be n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अब यहां पे हमारे पास n क्या दे रखा है 10, so I will put 10, 10 plus 1 11, 10 into 2 20 plus 1 21 by 6। 2 से कैंसिल किया 5, यहां पे आ गया 3, 3 से कट किया 7, so we are having 5 into 11 55, 55 into 7 we are getting 385। so for this particular question our answer is 385। अब आप इस वीडियो को पॉज करके what you can do, you can cross check by simply adding कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको स्क्वायर्स आते हैं या नहीं, और आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। Now this kind of question कि find the sum of 2 square plus 4 square plus 6 square up to 22 square को निकालने can come in various exams। अभी तक हमने क्या किया, sum of first n numbers के squares का sum। अब यहाँ पे क्या है, सारे के सारे even numbers के square हैं। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कैसे अप्रोच करें। इंस्टेड अगर हम यहां से 2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो क्या कुछ हो सकता है, लेट्स ट्राई। 2 का स्क्वायर होता है 4, हमने स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ही कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डिवाइड किया 1 स्क्वायर आ गया, 4 को डिवाइड किया 2 से, ये 2 आ गया। और वी कैन क्रॉस चेक, 4 डिवाइड बाय 4 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4 4 व्हिच इज 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 4 9 और आई कैन राइट 3 स्क्वायर, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 स्क्वायर, 22 डिवाइड बाय 2 वी आर गेटिंग हियर 11 स्क्वायर। अब ये अगेन दिस पोर्शन ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। सो नाउ आई कैन राइट हियर 2 स्क्वायर इनटू फॉर्मूला क्या था n इनटू n प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1/6। अब n क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 11, नॉट 22, इट इज 11 इंटू n प्लस 1 विच इज 12 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 11 22 प्लस 1 23/6। So directly 6 से कट किया, ये आ गया 2, so we are getting here 2 square as 4, 11 into 2 22, 22 into 23 will be 506. So now we have 4 into 506 will get 2024. So in this way हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके will get the answer for this question. Find the sum of 2 square plus 4 square up to 22 square. 2 square को कॉमन निकाला, then this remaining number resulted into the sum of squares of first 11 numbers. So we are getting this formula, using this formula 2 square into so and so. So 4 into 506, our answer will be 2024 for this particular question. Now we are having a question कि find the sum of cubes of first 10 natural numbers. अब इसका भी हमने important result किया था. So यहाँ पे we need to find 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to 10 का cube. Now the formula was n into n plus 1 by 2 को कर देंगे सीधा हम whole square. अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास 10, so I can write here 10 into 10 plus 1 11 by 2 का square कर देंगे. So we are getting 5. 5 into 11 we are having 55, 55 का square. अब सर ये square कैसे करें? Already I have posted one short video कि how to find a square of a number ending with 5. Using that logic, so 5 into 6 30 and 5 का square 25. So our answer will be 3025 for this particular question. So yes, using this formula, using the important result, we can find this answer of this kind of question only in 2 to 3 seconds. So with this various concepts and various basic learnings, now आप कैसा भी क्वेश्चन आए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन ओनली 10 to 15 सेकेंड्स. सो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस फॉर दिस विल बी पोस्टेड इन आवर टेलीग्राम चैनल हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो कीप स्टडिंग एंड लर्निंग. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी.